Hello everyone and very good morning all. Welcome you all to Ada 24/7 Odia YouTube channel ku samast welcome पिलामने. Good morning everyone. Very good morning all. तो हमें पिलामने Ssb Tgt रो pedagogy रो mock test discussion करछे. Today we are going to discuss mock test number 25. 25 means around हमें 625 30 भाया क्वेश्चन डिस्कशन करछे. तो समस्त पिला मानको गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार मध्य. जे जण भी अच्छा सेशन रे समस्त से सेशन को गोटे गोटे लाइक एंड शेयर कर दियंतु. देन विल स्टार्ट आवर सेशन. ओके यस चलो पिला माने स्टार्ट करबा. पूर्व आपण छोटिया थर्ड ऑफ द डे मो तरफ वर्क हार्डर देन यू थिंक यू डिड यस्टरडे. जदि मुझे आज 10टा क्वेश्चन पढ़ी खाली 11टा पढ़ तापरदिन 12टा पढ़ तापरदिन 13टा पढ़ डायरेक्ट 10 रु 20 को पढ़ा ना. धीरे धीरे 10 रु 11 12 13 एमती जाओ गोटे गोटे प्रोसेस रे बढ़ाओ. ठीक अच्छे. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग राहुल. गुड मॉर्निंग सुभद्रा. गुड मॉर्निंग विजयलक्ष्मी. गुड मॉर्निंग सौम्या. दैट इज कॉल्ड एज सेपिंग. कौन कहे सेपिंग कहे धीरे धीरे सेप हुए गोटे पर प्रोसेस बढ़ी बढ़ी चले. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सेपिंग. कौन तो कमे को सेपिंग बोली को. ओके चलो. तो वर्क हार्डर देन यू डिड देन इट यू थिंक दैट यू डिड यस्टरडे. ऑलवेज ट्राई टू मेक योर टुमारो इज बेटर देन टुडे. Always try to make your tomorrow is better than today. Okay. समस्त गोटे लाइक कर देल कि लाइक जब कल गोटे एस नो कह दियो गोटे लाइक एंड शेयर कर दे पे मैंने. चल तो आम लास्ट होमवर्क आंसर डिस्कसन करवा. ता सहित आपण को आज मॉक टेस्ट नंबर लास्ट होमवर्क आंसर डिस्कसन करवा. ता सहित मॉक टेस्ट नंबर 25 डिस्कसन करवा. आ लास्ट में आप होमवर्क अच्छे. ठीक अच्छे. लास्ट होमवर्क आंसर डिस्कसन करिए फास्ट देन मॉक टेस्ट नंबर 25 देन आपण मन लास्टली होमवर्क डन. चल दिस वाज द होमवर्क दैट आई हैड गिवन यस्टरडे. मॉक पीडीएफ मु दउछि ना शेयर करछि. In Indian school system, which of the following types of children are at risk for exclusion? In Indian school system, which of the following types of children are at risk of exclusion? को माने risk for exclusion ने थांती तो को माने basically disadvantage बोले हमें कही परिबे. Indian system रे disadvantage section रे को माने consider करा जाए. Disabilities, disabled, SC ST, women. These are they are called as disadvantage. So girl with children with disabilities है पारे, girl child is है पारे. The answer is both. Answer 3. डेढ़ सारा पिला माने कमेंट रे आंसर देइछन्ती. सबु ना गोडा आज मेंशन करि पारनी बट समस्त पिला माने मोतर को थैंक यू that you have attend my class and wait for the end. After the end of the class that you all also had commented. Yes बुझि पहले थी दौजी समय दौज तो पीडीएफ मु प्राय तो शेयर कर सब. ठीक अच्छे. तो स्टार्ट करिए पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू. व्हेन ए कुक टेस्ट ए फूड ड्यूरिंग कुकिंग it may be akin to what? When a cook tastes a food during cooking, it may be akin to what? Assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. The assessment as learning option only 3 option ही नहीं. Assessment of learning कदा भी ही परिबो नहीं. तो ये जो 1 1 इधर ऑप्शन कटला ओनली 1 तो कदा भी होबनी.
असेसमेंट ऑफ लर्निंग में समेटिव कदापि हेनी वन कदापि हम ना वन कदापि हम ना वन जब कदापि हेनी तो आंसर इज बेटर इज 2 बिकॉज असेसमेंट आज लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग assessment as learning is a part of assessment for learning. Yes, so answer is your 2. Only 2 is the answer. Done. Question number 2. Error of evaluation is what? Personal error, variable error, constant error, all of the above. Sir, all of the above असले आमे जो प्रकार खुशी से प्रकार खुशी आपण आम एक्सप्लेन भी करें ना जन को बहुत जोर टॉयलेट लगुच जाए जो टॉयलेट करला पर जो खुशी ये बड़ा खुशी होची व्हेन वी सॉ द ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन पर्सनल एरर वेरिएबल एरर कांस्टेंट एरर ऑल ऑफ द अबव तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो डी इज द राइट आंसर पर्सनल एरर रही पारे ह्यूमन एरर रही पारे विभिन्न प्रकार एरर रही पारे ओके सर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग इज अदरवाइज नोन एज डैश एब्सोल्यूट ग्रेडिंग को हमें अदरवाइज कौन कहबा नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग क्राइटेरिया रेफरेंस ग्रेडिंग स्टैंडर्ड ग्रेडिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर एटा ऑल बड़ा पेन चेष्टा कर दो बोधे हां अर्थ दब मत लागुची absolute grading is otherwise called as standard grading the कौन कहते standard grading absolute grading is called as standard grading the answer is option C not all it all देखिए all मार दलो ना भयंकर छुआ सब जगह संपूर्ण भाव भयंकर छुआड़ा more than 81 learners are there समझते गोटे सेशन को गोटे लाइक कर दे पिला बने एवरीबॉडी ए जे गोटे लाइक चल Question number 4. Which aspect of an item is considered during item analysis? Which aspect of an item is considered during item analysis? Item analysis बेले मैं को aspect को consider करूँ? Item कहले आमे को जे question. Item कहले आमे कहि परिबा एटा question analysis. Item analysis नो जे जो डालेमा पापड़ सालड सालड से आइटम पनीर पनीर से आइटम नहीं आइटम माने तुम कह स्वाद फाद आपको आम एनालिसिस करियो से एनालिसिस आइटम माने क्वेश्चन आइटम माने क्वेश्चन आइटम आइटम माने क्वेश्चन आइटम तो क्वेश्चन एनालिसिस रे कोडा देखा जाए डिफिकल्टी लेवल ऑफ द आइटम द आइटम इज मोर डिफिकल्ट और इजी और मॉडरेट देखा जाए एनालिसिस बेले हां देन डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स माने क्वेश्चन एमिन दिया है जे क्वेश्चन एमिन दिया है जे हाई अचीवर जी जो मैंने भल पढ़ते से बहुत भल स्कोर कर जो मैंने गत पिला पूरा खराब कर बहुत भल आ खराब आ भर जब बड़ गैप रही जाऊँगी डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्सटा भल नुहे डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स एत रहा कथा नहीं हाई अचीवर लो अचीवर भर गोटे कम गैप रहा कथा हाई अचीवर लो अचीवर मान भर गोटे कम गैप रहा कथा यस तो सी हम बेटर ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर Question number 5. 5 for you. तुमମାନଙ୍କର involvement, तुमମାନଙ୍କର participation in the live class is obviously truly remarkable. I appreciate all of you for your participation, for your engagement, for your like, for your share. Okay. ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ I truly thankful all of you. ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ହେଇଗଲା କି मेलोडी था लंबे था धन्यवाद रे if thorough evaluation is it's found that learning objective are achieved it clarifies which of the following यदि thoroughly हम evaluate करिबा learning objective गुडा को हम achieve करि परिबा it clarifies which of the following एबे तो कोडा रिगार्डिंग ठीक the same procedure can be followed for continuing the lesson. The content of a lesson is FE. FE means easy.
the educational process is functioning smoothly. Educational process smoothly chalibo. If thorough evaluation kara jaye, none of the bottom. If thorough evaluation is there, it's found that learning objectives are achieved and clarifies which of the following. The same procedure can be followed for continuing the lesson. All option. Option C better how. The educational process is functioning smoothly. It a better option. C hour. N C hour. C जो मन को जो ठीक है. C hour. I am always grateful for your. Thank you, Dipti. मुझे लगी इतनी कथा. Okay. Done. चल. Question number 6 for you. Keeping in view the aims of education, learning objectives are formulated, and these learning objectives are, when expressed in terms of pupils' behavior outcomes, are considered as dash. Instructional objectives, educational objectives, curricular objectives, none of the above. Keeping in view the aims of education, learning objectives are formulated, and these learning objectives को हमें otherwise कौन बोले consider करूँ जो थे learning outcome को हमें measure करूँ. These learning objectives is otherwise called as instructional objectives. हमें तो कौन को जाए तो learning objectives को हमें otherwise को instructional objective. तो answer is option A is the right answer. चल. Question number 7. Which of the following suggestion can be used to increase the reliability of scoring procedure? What is scoring procedure or reliability बा consistency? एक क्लास CTT पे भी है परियो तो निहाती है परियो. ये सब जगह CTT पे ही क्वेश्चन. CTT पे 200% है परियो. इन स्पेशल. Which are the following suggestion can be used effectively to increase the reliability of scoring procedure? Scoring procedure और reliability बढ़ाया पे को strategy को हमें effectively ग्रहण करी परिबा. Students' identity should be mentioned to ensure general impression. पिलार identity mention रहिबो. पिलार identity mention रहिले ना mention रहिले scoring एपट छोड़ है जो. तार पढ़ देवे ना ये मोर पिला पाखरे पढ़ुथला ट्यूशन होची मो पाखरे ए दे ताको 8 दे दे 10 दे दे. Students' identity should be concealed. Concealed माने कोन जो concealed को student identity should be concealed. जो conceal कोन देनी conceal माने hide. तो कोन जो जो माने concealer toner moisturizer ए जो से concealed. Concealed माने hide. हाँ. Students' identity should be mentioned to ensure general. No. Analytical method of scoring खराब ऑप्शन नहीं. Ensure using of halo effect. Halo effect माने कौन? Halo effect माने हो पिला माने you are judging a book without from its cover. You are judging a book from its cover. You are judging a book from its cover. Halo effect use करियो जमा. Halo effect जमा use करियो नहीं. Halo effect माने you are judging a book from its cover. ला. मने करो जने सार तुमको नुआ सार जने पढ़ाया आसले तुम देखले से गाड़ी पार्किंग करछन ना दाढ़ी फड़ी अछि. से पर आसी तुम क्लास करना दे. ये दाढ़िया ए ना ये पारिबो नहीं. दाढ़िया पारिबो नहीं मतलब दाढ़िया पारिबो नहीं बोधे. मतलब दाढ़िया पारिबो नहीं बोधे. एमित नु माने जण को न जानि कि न देखि कि न कथा है कि तुम जो आगुआ ताको जज कर दोछ. दैट इज कॉल्ड एज halo effect. Without knowing a person properly, if you are judging them, that is halo effect. Well, 3 is out. 3 out गला. The model answer along with suitable scoring key. तार स्कोरिंग की बा रुब्रिक्स मेंटेन कले माने स्कोरिंग की रे तू स्कोरिंग के अनुसार तू जदी आंसर लिख तो मार्क मिलिबो नल नाही. स्कोरिंग के अनुसार तू जदी आंसर लिख तो मार्क मिलिबो नल नाही. बुझला तो हैला ताले भलो है स्कोरिंग की बा रुब्रिक्स स्कोरिंग रे बायसनेस को रिड्यूस करे. स्कोरिंग रे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करे. इररिलेवेंट क्राइटेरिया आर टू बी इग्नोर्ड. Unnecessary criteria ignore करा जिवो while scoring if not included as one of the objective.
मनकर क्वेश्चन जदि ऑब्जेक्टिव बेस्ड अच्छी तुम ये ऑब्जेक्टिव आधार में पिला को मार्किंग कर अननेसेसरी फैक्ट अननेसेसरी कथा गुड़ा अवॉइड कर अननेसेसरी कथा को जब अवॉइड कर ऑब्जेक्टिव आधार जब मार्किंग दो मार्किंग रे कंसिस्टेंसी रहिबो भल कथा खराब कथा नुहे 4-5 4-5 बेटर ऑप्शन 2-4-5 थे भल होता 4-5 नहीं मैंने 4-5 बेटर ऑप्शन एनालिटिकल मेथड ऑफ स्कोरिंग अपेक्षा 4-5 बहुत बेटर एनालिटिकल मेथड ऑफ स्कोरिंग अपेक्षा 4-5 टा बहुत बेटर अने में अननेसेसरी आइटम को अवॉइड करछो ए आंसर जब ठीक मार्क दो ना ना हाँ एनालिटिकल मेथड ऑफ स्कोरिंग रे बहुत सारा प्रोसेस फॉलो करा जाए रिगरस प्रोसीजर फॉलो करा जाए डीप को जाए मे भी स्कोरिंग रे एपट सेपट हो पारे एनालिटिकल मेथड स्कोरिंग को भल खराब ऑप्शन करनी बट 2-4 बेस्ट ऑप्शन 4-5 बेस्ट ऑप्शन देन 2 आंसर इज टी असोसिएशन देजी रीजन देजी ऑल टीचिंग एम्स एट एंश्योरिंग लर्निंग ऑल टीचिंग एम्स एट एंश्योरिंग लर्निंग हाँ हो पारे ऑल सब टीचिंग रे पिला माने लर्न करंती ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग सर ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग लर्निंग इज फॉर्मल लर्निंग इज इनफॉर्मल लर्निंग इज फॉर्मल लर्निंग इज इनफॉर्मल तमें पढ़ी पार यू मैं रियल लाइफ रू मनुष्य शिखे मल्टीपल जगह मनुष्य शिखे यस ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग दैट इज फॉल्स कंप्लीटली फॉल्स बोथ आर ट्रू केमती हम यू कैन लर्न फ्रॉम रियल लाइफ हाउ कैन ट्रू ऑल लर्निंग डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग लर्निंग इज फॉर्मल जो फॉर्मल है टीचिंग शिखुचे इनफॉर्मल है रियल लाइफ शिखुचे कम्युनिटी शिखुचे सोसाइटी शिखुचे तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स बोथ आर ट्रू केमती हम नुहे ना मास्लो कंसिडर्ड अब्राहम मास्लो कंसिडर्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स सेफ्टी नीड्स and love and belongingness needs are as dash esteem need growth need aesthetic needs deficiency need शारीरिक आवश्यकता फिजिकल नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स सेफ्टी नीड्स all are part of a deficiency need एटा कार पार्ट deficiency need और ग्रोथ नीड क्या कह जाए कॉग्निटिव नीड को मनुष्य जो पाठ पढ़े एटा गोटे एफिशिएंसी एटा मनुष्य मौलिक आवश्यकता गुड़ा फिजियोलॉजिकल नीड्स सेफ्टी नीड्स लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स दे आर कॉल्ड एज डेफिशिएंसी नीड्स अकॉर्डिंग टू मास्लो सेल्फ एस्टीम नो क्वेश्चन नंबर 10 when dog is trained to catch a ball you can give the animal a food reinforcer each time it approaches the ball until finally the dog mouths and grab the ball referring to sensitization omission training tapping extension कौन सी जिनस प्रति तुम भीतर सेंसिटिविटी बढ़ावा तो सेंसिटाइजेशन कह जाए कौन से बैड बिहेवियर को स्टॉप करने को ओमिशन ट्रेनिंग बोली कह जाए कौन से बिहेवियर धीरे धीरे तुम भीतर गुड बिहेवियर लोप पाई जाओ एक्सटेंशन बोली कह जाए दैट इज कॉल्ड एज सेपिंग को सेपिंग कह जाए कुकुर बिहेवियर को चेंज करा कुकुर बिहेवियर को चेंज करा डॉग इज ट्रेन टू कैच ए बॉल बॉल धरने दिखाई प्रति थर बॉल धरले खाया दिखाई प्रति थर बॉल धरले खाया दिखाई जमी सेपिंग एग्जांपल हो कुरकुरे वाला एग्जांपल पिला जो चिप्स खाइले मिल शक्तिमान स्टिकर मिल कह 5टा चिप्स खाइले गोटे कार मिल सी 5टा चिप्स खाइला चक्कर रे सबुदिन चिप्स खाऊ धीरे धीरे चिप्स सहित अभ्यस्त होगा केवल से चिप्स ही भल लगुच कहनी जो मधु को धूपकाठी किणु सब्यसाची को भेटतु कि पातु गोल्ड कॉइन मधुकंस धूपकाठी कि गोल्ड कॉइन पाए चक्कर तुमको आउ कौ धूपकाठी भल लगुन तो मधुकंस धूपकाठी भल लगुच सेपिंग कह रिइनफोर्समेंट दे 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 धीरे धीरे अभ्यास परिणत करवा धीरे धीरे अभ्यास हाबिट परिणत करने को सेपिंग बोली कह जाए आंसर इज सी ना नहीं मो क्लास तुमको सेपिंग कर पारुची
किसी इनफोर्समेंट दौनी करिपारछि ना नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 नॉन रिफ्लेक्सिव voluntary behaviors are associated with what? Apparent, classical, insight, social. Insight रे हमें बुद्धि अप्लाई करके निजे निजे करूँ। नॉन रिफ्लेक्सिव और वॉलंटरी बिहेवियर्स आर एसोसिएटेड विथ एटा कहाँ सहित एसोसिएटेड? वॉलंटरी बिहेवियर ना नहीं जाए। नॉन रिफ्लेक्सिव और वॉलंटरी बिहेवियर रिजल्ट आसले जाना पड़ेगा। अच्छा नॉन रिफ्लेक्सिव और वॉलंटरी बिहेवियर आर एसोसिएटेड विथ कहाँ सहित एसोसिएटेड? फास्ट आम बिहेव करवा तापर आमको मिल रिइंफोर्समेंट फास्ट एक्शन फास्ट रेस्पॉन्स तापर स्टिमुलस एटा कोथरे हुए? ऑपरेंट कंडीशनिंग हुए। तेणु आपको कॉन्सिक्वेंस कंडीशनिंग भी कहा जाए, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाए, आरएस कंडीशनिंग भी कहा जाए, कॉन्सिक्वेंस कंडीशनिंग भी कहा जाए। रिफ्लेक्सिव एक्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, नॉन रिफ्लेक्सिव वॉलंटरी बिहेवियर है ऑपरेंट कंडीशनिंग, आपको कॉन्सिक्वेंस कंडीशनिंग भी कहा जाए। कॉन्सिक्वेंस इंस्ट्रूमेंटल यस। क्वेश्चन नंबर 12 in learning centered approach the students are expected to take the overall responsibility for learning and assessment. In which way this helps students? Eta ko eta pila manu sahajya kare? Students become self directed lifelong learners. Students become proficient with all information literacy skill. Students can do assess their own learning. In learning centered approach रे पिला माने ओवरऑल रेस्पोंसिबिलिटी नियंती। स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ डायरेक्टेड लाइफ लॉन्ग लर्नर होती। स्टूडेंट बिकम प्रोफिशिएंट विथ ऑल इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल दे बिकम। स्टूडेंट कैन डू असेस देयर ओन लर्निंग पिला माने सेल्फ लर्नर होती। हाँ सेल्फ लर्नर हो पारे सब जगह हो पारे एबीसी 3टा जगह हो पारे डी डी जीव सब जगह। क्वेश्चन नंबर 13 which of the following best describe the concept of reliability in a test? Which of the following best describe the concept of reliability in a test? कोटा reliability को define करूछ? Internal consistency, the degree to which the test yield consistent result over time, the process of selecting representative sample of test, the ability of the test to differentiate. The ability of the test to differentiate कहीं करिए? differentiate option से तो संपर्क अच्छी। हाँ selecting representation क्वेश्चन सिलेक्शन एथरे हुए नहीं। हाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे ठीक अच्छे, रिजल्ट सब बड़े कंसिस्टेंस रहे ठीक अच्छे। ए बी दीटा जाक करेक्ट ताले आंसर होची बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 when developing a criterion reference test which is the primary focus? आमे जतले criterion reference test बा सीआरटी बनौचे, सीआरटी माने ओटीटी सीटीटी वाला जो टेस्ट बनौचे आ भीतर कोटा हमर प्राइमरी फोकस कंपेयरिंग टेस्ट टेकर्स टू ईच अदर सर कंपैरिजन एनआरटी रे हुए। इवैल्यूएटिंग टेस्ट टेकर्स अगेंस्ट ए प्री डिटरमिन स्टैंडर्ड आगु गोटे प्री डिटरमिन स्टैंडर्ड आगु डिटरमिन हे 90 रखिले क्वालिफाई नॉन डिस्क्वालिफाई और 68 रखिले क्वालिफाई नॉन डिस्क्वालिफाई ए अनुसार हम इवैल्यूएट करू। असाइनिंग ग्रेड बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अनुसार ग्रेड दिया जाए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एनआरटी रे हुए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोथरे हुए? एनआरटी रे हुए। काट देटा
measuring the reliability of the test scores. Reliability criteria रे measure criteria रे reliability measure करने की आवश्यकता नहीं. Criteria रे reliability measure करने की आवश्यकता नहीं. तो only B माने आंसर हो D. ठीक अच्छी. तो D is the right answer. जेते जन भी अच्छे सेशन रे पाखा भी 111 खने पिला अच्छो गोटे लाइक कर दो ना करियो ना है लाइक गोटे कर दियो रे हां करियो नहीं चल तो आंसर इज ओनली डी इति रिलायबिलिटी से संपर्क किछ नै सेट रो क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड in educational setting? What is the purpose of how दियो तुम आंसर दियो टाइम दियो. What is the purpose of anecdotal record in educational setting? To track students good and bad behavior, to gather quantitative data for statistical analysis, to capture specific event and incident, to evaluate student performance in a standardized test. Anecdotal record माने anecdote अर्थ ही होची specific event. हमें पिलार गुड बिहेवियर बैड बिहेवियर को ट्रैक करू ठीक अच्छे कैप्चर स्पेसिफिक इवेंट ये भी ठीक अच्छे क्वांटिटेटिव डाटा और टेस्ट आ सहित एनेक्डोटल रिकॉर्ड संपर्क किछि नै बी और डी सहित संपर्क किछि नै ए सी इज द राइट आंसर. आंसर इज ऑप्शन बी. आंसर इज ऑप्शन बी. ए एंड सी इज द राइट आंसर. Question number 16. Summative evaluation is also known as dash. Content evaluation, primary evaluation, cost evaluation, impact evaluation. Summative evaluation is otherwise called as dash. Content evaluation, primary evaluation, cost evaluation, impact evaluation. Summative evaluation सब बड़े लास्ट को आसे एवं एडा पिलार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऊपर इम्पैक्ट पकाए यस यस जेहेतु जजमेंटल इन नेचर इट कीप्स एन इम्पैक्ट ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो समेटिव इवैल्यूएशन इज अदरवाइज कॉल्ड एज इम्पैक्ट इवैल्यूएशन. क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ी आंसर दियंतु. In a socio-constructivist classroom, zone of proximal development created in children through the process of dash. Socio-constructivist classroom रे को process रे हमें ZPT create करूँ को process रे पिलार involvement बढ़े. Dialogue, disinterest, negative reinforcement, conditioning. Disinterest तो negative word. Negative reinforcement सहित socio-constructive classroom बा भाइगर स्किनर के संपर्क में स्किनर वाला. Conditioning पाब्लो स्किनर. डायलॉग बाय इंटरेक्शन डायलॉग कहले इंटरेक्शन बा सोशल इंटरेक्शन का भीतर इंटरेक्शन इज स्टूडेंट भीतर हो कि स्टूडेंट भीतर हो यस. तो डायलॉग इज ए टू वे इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन माध्यम रे सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस रे पिला माने सिकंदी बोली बायगर्स क्वेश्चन सो सोशल इंटरेक्शन डायलॉग रे बेटर हुए बा कौन डायलॉग को अदरवाइज हम कोन कहि परिबा कन्वर्सेशन. डायलॉग मेथड फाउंडर के प्लाटो. डायलॉग मेथड फाउंडर प्लाटो इज द फाउंडर. Question number 18 for you. What is the primary difference between assessment and evaluation? Assessment evaluation भितर primary difference कौन? Assessment involves data gathering while evaluation involves data analysis. Assessment is subjective, evaluation is objective. Assessment and evaluation are interchangeable terms. Interchangeable difference कौन रहिबो? Same तो हेगला. Assessment is used in education while evaluation is in healthcare. Assessment is used in education while evaluation in healthcare. किंतु कहि परियो नै एजुकेशन ने हेल्थकेयर काहे की एटा तो हबनी जे असेसमेंट सब्जेक्ट इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव कोन पे ए दिन तो हबनी बीसीडी हब नाही कत हो जे हो. असेसमेंट इन्वॉल्व्स डाटा गैदरिंग इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स डाटा एनालिसिस. डाटा गैदरिंग कराला एथरा एनालिसिस करिकि जजमेंट दिया गला. तो आंसर इज ऑप्शन ए. Question number 19. Which among the following is not included under primary aspect of instructional process?
प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस भीतर कोड़ा जाऊ नहीं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसीजर डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिविजन एक्सरसाइज लर्निंग एक्सपीरियंस which of the following is not included under the aspect of instructional process कोटा instructional process रा गोटे पार्ट नुहे इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस रे हमें पाठ पढ़ा प्रोसेस रे हमें ऑब्जेक्टिव सेट करू डायग्नोसिस और रिमेडी तो पाठ पढ़ा सहित चालू थाए पाठ पढ़ा भितर हमें पिलार लर्निंग एक्सपीरियंस को तो इन्वॉल्व करू ना इवैल्यूएशन पढ़ी सारा परे हुए इवैल्यूएशन लर्निंग अलग अलग दैट पढ़ी सारा जदि असेसमेंट कहि तुम कहि परता हां असेसमेंट इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस रो पार्ट बट इवैल्यूएशन कैन बी डन एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस तो आंसर बी इज बेटर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 क्लासिफाई द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन पढ़ो टाइम नहीं तुम कर उठिया 9C section children are not studious 3rd A section child can be better guided in co-curricular activities Karnataka students perform better in science than children of other states Gopal has got a C grade in the final examinations Specially disadvantaged students need to given extra help in academics which classify the statement based on evaluation evaluation based statement next number B 2-5 2-3-5 अच्छा देखो बेसिकली हम जो इवैल्यूएशन कहूँ इवैल्यूएशन माने व्हेन यू आर गिविंग ए फाइनल जजमेंट इवैल्यूएशन माने हम कौन कहूँ व्हेन यू आर पासिंग ए फाइनल जजमेंट असेसमेंट माने कौन कहूँ असेसमेंट माने हम जो इम्प्रूवमेंट ऊपर फोकस करूचे फीडबैक ऊपर फोकस करूचे व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन इम्प्रूवमेंट एंड फीडबैक दैट इज असेसमेंट when you are focusing on improvement and feedback that is assessment when you are focusing on the final judgment that is evaluation 9th C section students are not studious this is judgment नवम श्रेणी रो C section पिला पढ़ंती नहीं नवम श्रेणी रो C section पिला पढ़ंती नहीं एटा तो जजमेंट जे जजमेंट इज इवैल्यूएशन स्टेटमेंट 3rd A section चाइल्ड माने पिला मानू को करिकुलर एक्टिविटीज रे आउ टे बेटर गाइडेंस दरकार बोली तुम इम्प्रूवमेंट ऊपर फोकस कर मैंने यहाँ असेसमेंट कर्नाटक स्टूडेंट्स साइंस रे अन्य पिला मानू बेटर करिसेंती माने एटा फाइनल जजमेंट एटा इवैल्यूएशन गोपाल C ग्रेड पाइला व्हेन यू आर तुम जो ग्रेड रैंक मार्क दउछ व्हेन यू आर पासिंग ग्रेड रैंक मार्क दैट इज इवैल्यूएशन सोशल डिसएडवांटेज पिला मानू आम एक्सट्रा हेल्प दरकार आम इम्प्रूवमेंट पर गुरुत्व दौचे तुम्हें असेसमेंट 1-3-4 इज द इवैल्यूएशन 1-3-4 इज द इवैल्यूएशन ओके आंसर इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 21 आसेसन देछि रीजन देछि Assertion देछि रीजन देछि Mohan believes that learning with the help of someone is much more effective so helps their students in their learning by using various methods Mohan believe that so reason देछि scaffolding in terms is the term which define the difference between learning by self and the help of others कला मोहन बिलीव करछि जे आमे जदि लर्निंग रे पिला मानन को हेल्प करिबा लर्निंग और इफेक्टिव हो सेति में से छुआ को बिना मेथड रे हेल्प करछि स्कैफोल्डिंग माने को जे डिफरेंस बिटवीन द टर्म
learning by self and the learning by others. कौन आंसर आंसर what is the right answer? A is correct. Both are true. Question number 22. A child labeled the head of the committee as a chairperson instead of chairman. It indicates that the teacher is using dash. The teacher is using has a good command of language, use as a gender free language, has gender bias, follows a more acceptable term. Teacher chairperson को chairman बोली कहउछंती, chairperson को chairman बोली कहउछंती माने जेंडर बायस कदा भी नुह से चेयरपर्सन से चेयरमैन न कह कि इंस्टेड ऑफ चेयरमैन हाँ चेयरमैन न कह कि चेयरपर्सन बोली कहउछंती चेयरपर्सन इज ए जेंडर फ्री लैंग्वेज चेयरमैन ना कह कि से चेयरपर्सन कहउछंती माने एटा जेंडर फ्री लैंग्वेज आंसर इज बी so it is a gender free language answer is B. In order to reduce subjectivity and increase transparency in scoring oral representation speech subjectivity को कमे कि scoring रे transparency रखिया पाई scoring रे transparency रखिया पाई हमें करिवा कोन CRT करिवा मल्टीपल इवैल्यूएशन करिवा रुब्रिक्स कौन करा जाए rubrics helps in maintaining the fairness in scoring. Yes. Question number 22. Which one of the following assignment practice will bring out the best in students? कोटा पिला मानक भीतर best develop करि परिबो when students are required to reproduce fact सस्ता ऑप्शन when conceptual change हे पिला मानक भीतर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अप्लाई करछन पिला माने विभिन्न प्रकार मेथड अप्लाई कराई भल कथा मार्क सस्ता एम्फासिस फुनी स्कोर सस्ता मार्क स्कोर सस्ता आगला देन आंसर इज बी conceptual changes be the right answer. The ideas of teaching the whole world is in the philosophy of pragmatism in education means teaching student to be a good dash. Pragmatism मतरे पिलां को पाठ पढ़े कि पिलां को कौन बनेबार अछि गुड व्हाट सिटीजन थिंकर लर्नर साइंटिस्ट pragmatism always believes in making good citizens so answer is option A is the right answer. Okay चलो इधर स्कोर वाला पिला ने जणे दो एडा होमवर्क एडा स्क्रीनशॉट नहीं जाओ आंसर दबो कमेंट रे ठीक अछि सेशन को बहुत बड़ा लाइक कर दियो लाइक तो छुटिया रे तुम बड़ा लाइक करो ऑफर एंड एजेस पिला एटा सॉरी आपनकर पिला माने OSSC रो बही आरआई अमीन रो बही अछि ला Y594S कोड अप्लाई करी नहीं परिबो कोड मन रखुछ ना कि मन रखनो कि अप्लाई करनो पड़ी आरआई रो बैच पिला माने फर्स्ट एप्रिल स्टार्ट है कैन जॉइन द बैच आल्सो मैथ बैच मानसर को मैथ बैच ऑफलाइन नो टेस्ट सीरीज पूरा हार्ड कॉपी जीवो एसएसबी टीजीटी बैच 15 फेब्रुआरी रो देन आपनकर बीडी एंट्रेंस रो बैच मध्य स्टार्ट है पिला माने 23 मार्च एसएसबी पीजीटी रो एजुकेशन बैच रो कंप्लीट बैच 2 एप्रिल मध्य स्टार्ट हो कोड मन रखछन Y594 कोड ठीक अछि तापर आपन मन पे छुटिया कथा व्हाटएवर वी बिलीव अबाउट आवरसेल्फ आवर एबिलिटी कम्स ट्रू फॉर अस ला मन रखिया दकर व्हाटएवर वी बिलीव अबाउट आवरसेल्फ आवर एबिलिटी कम्स ट्रू फॉर अस जा हमें निज बापदरे विश्वास करछे हमर एबिलिटी ता ऊपर गुरुत्व दो ठीक अछि तो थैंक यू सो मच पिला माने समस्त पिला माने थैंक यू जे क्लास रहले जो होमवर्क क्वेश्चन देछि तार आंसर कहबे और क्लास किन भल लागले खराब लागले कमेंट करी निहात जणाइबे देखा पिला माने काली विथ मॉक टेस्ट नंबर 26 देन टाटा गुड बाय नमस्कार।